And Sportsweek, you won the toss here. What do you decide over here? We'll bet first. Any reason you are betting over here? Looks a good wicket. It's a used wicket, so we'll look to bet first. So what will be the fighting target you think over here? I think around 170, 180 will be a good score. Best of luck for your match. So तू टॉस खेळलो आणि तू डिसअपॉइंटेड जालो टॉस खेळून टॉस खेळून जालो म्हणल्यार आमकां फिल्डिंग जाय आसली मेळ्ळी आमकां फिल्डिंग खुशी जाला. Thank you. So best of luck for your match. So the news out from the centre is Sportsweek. They won the toss and elected to bat first over here in his first match of the day 2.
Good morning, everybody. It's me, Raj Bandurkar, and boy, here we go. News out from the center. This match will be played between the Teejan's versus Sportsweek. Sportsweek, they won the toss and elected to bat first over here in this first match of this day 2. First All Goa Leather Ball Cricket Tournament organized by MACQUA. And two teams walking in the middle there. Sportsweek versus Teejan. Sportsweek won the toss, elected to bat first. Sanat, the man on strike. Non-striker and Manthan. Rahul Bandhari, the bowler. Two umpires there. Rajesh Shignapurkar, leg umpire Raman Mayekar, the match referee Uday Naik, the BCCI. And you can see the broadcast AB 25. You can see this live action on YouTube. One of the best in the business. And boy, here we go. Sanat, the man on strike. A non-striker and Manthan. First delivery of the day 2. Match number 1. Sanat, the man on strike. Boy, here we go. Excellent start. He'll off the mark with the boundary here now, Sanat. That is a MACQUA boundary, first boundary of this day 2, match number 1. Good delivery there. I'll take the single. It's sensible batting from the champion. Boundary and a single. Manthan, the man on strike. Five runs on the board. We're into these power play overs. Only 2 fielders are patrolling that boundary line and the rest in the inner circle. No shot into the gap. That's running down a track for foe. Magnificent shot from the fellow. That'll run another MACQUA boundary here, you can see. Tremendous batting from the left-handed batter. Excellent start from the champion. And what a way to off the mark with the style with the boundary. Manthan. It's a nice combination between the right-handed and the left-handed batter in the middle. 9 runs on the board with that boundary.
And that's been given wide there. Rajesh Shignapurkar, the umpire. 10 runs on the board with that wide. And he'll get a single here. In come the throw there, you can see. And 11 runs on the board with that single. Into the first over. It's a long way to go from here now. 11 runs already came in this first power play over. Sanat, the man on strike. Dot. The last delivery of the first over. 11 runs has been scored in that so far in this power play over. Oh, another race and yes, no, and good running between the wickets. So one of the first 12 run has been came in that first over, 12 for none. Faizan into the attack, will be bowling a second over for the side. Sportsweek, they won the toss, they elected to bat here. Faizan into the attack. 12 run has been came in that first power play over. You see deep point there. Long off and boy, fine leg there. MACQUA season 1 here in Porurim, and keeper standing up here now. Shot straight down the ground, fielder will cut off. Goodness, by that will run the boundary here now. Tremendous batting from the fella. Sanat, the man. Another boundary for the champion bat. 16 runs on the board. Into the second over. Faizan is not a good welcome for the bowler. You can see the straight way the fielder has been changed. So one in the long on and long off. Straight away the fielder has been put in there in that area. Oh goodness my, that's wait for them passing. I think he'll be fine with that delivery. You can see delivery has been a little cap low this time. 16 runs on the board into the second. Oh, shot into the gap. Magnificent batting from the champion. That's a MACQUA boundary for you. Have a look at this. Great timing from the champion into the gap. No chance whatsoever to stop that one. Excellent shot from Sanat. "20 runs on the board. It's a flying start for this Sportsweek. Won the toss, elected to bat, and a solid defense there.
Got a boundary here. Have a look at this on the replay. Tremendous batting from the champion. Overthrow, boundary. 24 runs on the board. Once again, you can see the delivery cap low. Farzan, the bowler. Already 12 runs has been came in this over. 12 runs has been came in that previous over, the first over, and now yet again, the last delivery of the second over. Sanat, the man on strike. Solid defense to end that over. So end of the second, 24 runs on the board, a loss of none. Ravi Sahani, the bowler, into the attack, will be bowling a third over for the side. Manthan, the man on strike. It's a good combination between these two batters in the middle. Right-handed batter in the left-handed batter. Playing solid cricket at the moment. Putting 24 runs on the board in the 2 overs. Flying start, I would say, from this Sportsweek. They won the toss, elected to bat straight away. Great to win the toss for the captain. Oh, McNavision into the gap. That's running down the track for MACQUA boundary. He'll get a short delivery and has been put away into the gap for what a shot from this Manthan bat. 28 runs on the board. We're into the third. Ravi into the attack. He'll be bowling third over for the side. Shot is a fielder will cut off. Oh, into the gap. A good fumble there, fielder. Good save there. And a good cricket. Another dot from this over. 4 and 2 back-to-back dot delivery from the Ravi. Top start. This has been 28 runs on the board. Solid defense once again. I'll take the single. 29 runs on the board with that single. This is turning out to be a really good over for these fielding side point of view. Teejan. This will be interesting now. Sanat, the man on strike, faced 10 deliveries, 18 runs, is playing. Oh, shot into the gap. Magnificent shot from Sanat's bat. That's another MACQUA boundary for you. Tremendous batting from the champion. Have a look at this. What a timing from the fella. Excellent start from the champion.
He moves on the 22 in from the 11. 33 runs on the board with that boundary. Tremendous start from this sports week. It's a flying start though. Way into the third over, last delivery of the third over. 33 runs on the board. Oh, even better, magnificent. One bounce into the fence for four. Another MACQUA boundary. What a batting this has been. Unstoppable Sanat. 37 runs on the board. 6 has been given. Sorry for that. And what a shot from the champion. What a way to end that over with the 6. This has been a quality batting from the Sanat. That's 6. .39 run has been scored in that 3 over. It's a flying start from the champion. Sportsweek won the toss and a really good toss to win for them. They are really after the bowlers in this first match. No respect has been given at all for the bowlers. This will be interesting now. Manthan, the man on strike. He's playing on the 10, face 6 deliveries from the champion left-handed batter. New bowler into the attack. Oh, terrific dot delivery to start with. Oh, dancing down the track, another single. Great cricket from the Manthan there. Because he knows that man is turning things off at the moment for them. Sanat is an enormous touch, this champion. He's really going after the bowlers. Moving into the 4th. Faizan, the bowler, bowling his 2nd over. Oh, magnificent. Inside out this time. Into the short extra cover for 4. Another boundary, 44 runs on the board. Goodness my. He's not giving a respect for the bowlers at the moment. He's really going after the bowlers. Faizan under pressure straight away. What a batting from the champion. He moves to 32 in 13 deliveries. What a inning this has been from the champion batter. Well, once again, didn't connect a dot delivery. Faizan, the bowler, 44 runs on the board. Oh, shot, stayed down the track. Away she goes into the fence for 6. A magnificent, it's a monster hit from this batter. Sanat, what a hitting this has been. That is a MACQUA 6 for you guys there. Have a look at this on the replay. Bang, into the fence for 6. Tremendous batting. This has been a high quality batting from the champion Sanat. Solid defender, sensible cricket. Yes, no, at the end. Easy taken. Good throw in the end. Great cricket all around. It's all happening over here. 51 runs has been came in that 4 overs. 4 overs has been gone. 51 for none.
can see 4 overs has been gone, 51 runs on the board. It's a flying start for this Sportsweek. They won the toss, elected to bat first. Sarvesh into the attack, will be bowling the 5th over for the side. Oh, shot down the ground. That is another boundary. Magnificent hitting. This has been quality inning he's been playing here at the moment. Sanat moves to 43 in his 17 delivery. Score moves to 55 runs on the board. Goodness my, what a batting from the champion. He's shuffling his gears early in his inning. Tremendous batting. This has been clean as you like. Oh, swing and a miss there. And terrific delivery, I would say, by Sarvesh there. Everything was there in that delivery. Bang. Terrific. Absolutely terrific. Oh, that will be another dot delivery, another dot. He's looking solid, that man on the strike, Sanat. And his partner on the other end, Manthan. He's very quiet though. 8 delivery has been for his 11 runs. But this man on the screen, he's just turning things off for them, for this Sportsweek. 19 deliveries, 43 runs on the board. Goodness my, what a hitting from the champion. Straight down the ground. It'll be filled with. Oh goodness my, bit fumble there. But they just settled for one. In come the throw. Perhaps score moves to 56 runs on the board with that single. This has been a tremendous batting from this right-handed batter and the left-handed batter in the middle. Good combination between these two batters. 2 deliveries remaining of the 5th over. Score moves to 56 runs on the board. 56 for none. Flying start, I would say, from this sports weekend. Tremendous grade. Oh, excellent start and another dot. This is turning out to be an excellent over. Only 5 runs has been given. Last delivery of the serviced over. Oh, magnificent. That's going easy. That's biggie. That's MACQUA 6 from the left-handed batter. Tremendous hitting once again by the left-handed batter, Manthan, this time. So what a way to end that over with a 6 from, for the Sarvesh. Once again, way she goes into the fence for 6. A lovely piece of timing from the left-handed batter. In the change in the commentary box straight away, there will be a Krishna Devji will be joining us. थैंक यू राज। गणपति बाबा मौर्य इस आगाज के शुरुआत मैदान पर शुरू के माहौल में लगभग 5 ओवर हो चुके, 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, हमारे जो कि अंपायर्स ऑफिशियल, उनके साथ साथ हमारे तीसरे अंपायर भी उदय नायक सर, आपको भी नमस्कार। और खास गोरा जी के सबसे बेहतरीन समालोचक इंग्लिश में हरीश काकुलकर सर, आपको भी हमारा नमस्कार इस मैच के दरमियान। तो शुरुआत करेंगे इस ओवर की, बिल्कुल छठे ओवर की मैदान पर।
ऑफ टर्न के बाहर कट किया, इनको शॉट कवर पर खिलाड़ी पीछे था और जहां पर रन नहीं मिलेगा। देखिए बैकफुट से वहां पर खेल रहे मैदान पर। अभी तक आप बताइए, बैकफुट से कट मारने का प्रयास किया था, गेंद को बिल्कुल परखा था वहां पर, लेकिन गैप ढूंढ ना पाए वहां से। और इस बार सीधा खेल, अब शायद क्या वहां पर बिल्कुल हाथ से लगी या नहीं लगी ये भी देखना पड़ेगा। अगर लगी है शायद अंदर है खिलाड़ी, लग रहा है साहब यही कुछ हुआ, इसलिए अपील हुआ नहीं वहां पर। थोड़े अगर आगे निकल जाते तो शायद मौका था वहां पर रनआउट का। ये बहुत बढ़ता है ऐसा, हमेशा ऐसा होता है कि कभी हाथ से छू जाते, कभी शरीर पर लग जाती है। और फिर से बैकफुट पर, ओ शायद देखिए गेंद लगी है, वामन सर पर गेंद लगी है। वामन सर दिखा रहे वहां पर, देखिए होता है बहुत बार कि शायद वामन सर बचने का प्रयास कर रहे थे, शॉट इतना तेज था ना कि जाकर टकरा गई गेंद जल्दी। देखिए आप देख सकते हैं कितनी तेज लगी गेंद वहां पर। ओ इस बार बिल्कुल अब अच्छा वहां पर सही हो गया वहां पर। देखिए सेंसिबल क्रिकेट, बिल्कुल अपने आप में रोका, अपने आप को पता था पहली दो गेंद पर वो प्रयास कर चुके शॉट लगाने का, लेकिन दोनों बार असफल हुए। अपने आप को बिल्कुल सामने रखा, बल्ला स्थिर रखा वहां पर। अंपायर की भूमिका में राजेश सर जो कि स्क्वायर लेग हम पर जहां पर बैटिंग एंड पर रहेंगे, वामन सर बॉलिंग एंड पर। ये जोड़ी अंपायरों की मैदान में। इस बार बिल्कुल कवर पर खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है। शॉट मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को रोका है, लेकिन वहां पर लेकिन लगातार डॉट गेंदे हो चुकी है इस ओवर की। 5 गेंदे डॉट क्या मेडन और जो कि डाला जाएगा। ओ इस बार बिल्कुल घुटना टेका, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। मैकवा सिक्सर मैदान में लगता हुआ। देखिए टाइमिंग देखिए, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी जो कि बिल्कुल हवा दी, गेंद को ऊपर किया, फ्लाइट किया, वहां पर मौका हाथ खोलने का दिया और बल्लेबाज ने उस न्योते को स्वीकारा और बड़े शॉट के साथ इस ओवर का बिल्कुल अंजाम देखने को मिला मुकाबले में। मतलब 6 ओवर के बाद 68 पर पहुंचा। सदात ने होगी जिनके 50 रन पूरे हो चुके हैं। बल्ला दिखाइए, एक बेहतरीन बॉलिंग इस छक्के के साथ अब बल्ला दिखा सकते हैं। लगभग प्रतियोगिता में छठा है ये 50 रन का। कल 5 50 रन बारियां खेली गई और एक ही टीम ने लगभग एक ही टीम के खिलाड़ी 2 बार बिल्कुल सुबह के माहौल में, शाम के माहौल में खेली गई। एक बेहतरीन पार्टनरशिप भी देखने को मिली कल के मुकाबले में। रोहित जानकारी दे रहे हैं हमें कि 50 रन जहां पर पूरे हो चुके हैं, अप स्ट्राइक पर जो कि बैटर रहेगा मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब शॉट, बैकफुट से शॉट को खेला गया। बिल्कुल उतनी खराब गेंद, कमजोर नहीं थी गेंद, लेकिन टाइमिंग की अगर बात बताई जाए, एक कमाल का टाइमिंग निकला और बल्ले से निकला चौवा। शुरुआती ओवर की चौवे के साथ मैदान पर। दर्शक जो दूसरे पेशों से उनसे कहना चाहूंगा, टॉस जीता स्पोर्टविक टीम ने, जिसके जवाब में पहले बैटिंग करने का निर्णय मैदान पर लिया गया। और पार्टनरशिप भी देखिए, लगभग 72 की पार्टनरशिप अब तक इस जोड़ी के बीच में हो चुकी है। सर्वाधिक पार्टनरशिप लगभग 79 की है प्रतियोगिता में। उसके पीछे पार्टनरशिप ये दौड़ रही, मतलब लग रहा है आज 100 का वो पलड़ा पार्टनरशिप का पूरा हो सकता है इस मैच में। और इस बार ड्राइविंग किया, क्या खूबसूरत कारपेट के साथ खेला एक शॉट को। सिर्फ शॉट को देखिए, इस वक्त वो चौवा बिल्कुल आप इसको फोटो खींचकर उसको फ्रेम लगा सकते हैं। इतना बेहतरीन टाइमिंग, सिर्फ बल्ले की मधुरता देखिए। ये देखिए ऑफ स्टंप पर गेंद, कितना खूबसूरत कवर ड्राइव, बल्ला ने पोजीशन देखिए, सर स्थिर रखा, बल्ला सामने रखा और उसी अंदाज के साथ ये शॉट मैदान पर। पहले स्क्वायर लेग पर, दूसरा कवर पर। अब परेशानी का घेरा गेंदबाज के लिए, अब गेंद कहां करनी पड़ेगी। उनके बचने के जो मौके थे वो दोनों मौके पर वो चौवा मार चुके बल्लेबाज। अच्छा ग्रेड वापस, सेंसिबल, मंदार ने बिल्कुल ठीक ठाक किया।
थोड़ी सी गेंद ऊपर की थी, लेन डिलीवरी जहां पर मौका भी था खोलने का, लेकिन मंदार ने अपने आप को रोका। पता है कि पार्टनरशिप 100 तलक अगर बनती है तो टोटल 180 तलक बन जाएगा आराम से मैदान पर, शायद उससे भी ऊपर बनेगा अगर विकेट हाथ में बचते तो 200। आजकल 200-250 आप आईपीएल में देखते हैं बहुत बार। ओह, थोड़ी सी रुकावट वहां पर, अंपायर ने इशारा कर दिया डेड बॉल का। थोड़ी सी परेशानी ये बहुत बार होती है इससे। कभी कभी बल्लेबाज तैयार, कभी कभी गेंदबाज रनअप लेते ना, तो उस वक्त ऐन मौके पर जब छलांग लगाते हैं तब कभी कभी फिसल जाते हैं, क्या मोमेंटम टूट जाता है। ओह, ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटने का प्रयास किया। देखिए गति थी इस गेंद पर, इस गेंद पर कितनी गति थी, मंदार के लिए बहुत मुश्किल था। 2 बाउंड्रीज लग चुकी है, 676 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 6 और 4 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। मंदार वापस स्ट्राइक पर, 5 ऑफसेट पर, 4 ऑनसेट पर, ये चक्रू मैदान पर। शॉट पिच गेंद, चेक किया शॉट को, स्क्वायर लेग पर हवा में नहीं खेला, सिर्फ टाइमिंग किया गेंद को। स्क्वायर लेग और मिड विकेट खिलाड़ी बहुत तेज निकले, कॉल उतना अच्छा था लेकिन 2 रन वहां पर नहीं रुकते, मतलब 10 रन अभी तक इस ओवर से निकल चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा 78 रन पर। तेजान टीम बॉलिंग कर रही है मैदान पर, टॉस हार चुकी है और सभी ने कहा था ये मुकाबला आज बहुत कड़क होने वाला है। लगभग इस मुकाबले में आपको 180-90 रन देख सकते हैं और वही बाकी सच है मैदान पर। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, क्या खूबसूरत, सिर्फ लहराया सहलाई शॉट को और मैकवा चौवा मैदान पर निकलता हुआ, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। 4 रन और 4 रन के साथ सर्वाधिक बड़ी पार्टनरशिप आज के मतलब पूरे प्रतियोगिता में हो चुकी है इस वक्त 82 रन की, इसलिए भी तालियां बजाई कि ये 82 मतलब एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप इस मैदान पर। देखिए सुबह का जो माहौल था 79 का पार्टनरशिप वो टूट चुका है, शाम में लगभग 90 रन की पार्टनरशिप हुई थी 103 रन की। क्या वो पार्टनरशिप भी वो पहले विकेट के लिए नहीं थी, ये सर्वाधिक पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए बढ़ी है। रोहित हम यही बात कर रहे हैं, आप यही हमें बता रहे हैं। गेंदबाजी में तब्दीली और इस बार बिल्कुल शॉट को खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, गेंद तेज है, बहुत सुंदर फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। टीम के लिए कम से कम 3 रन बचे वहां पर। देखिए जब विकेट गिर नहीं रहे और फील्डरों का साथ होना तो शायद मैं कहूँगा बहुत मुश्किल होता है हमेशा बल्लेबाजों के लिए। देखिए किसी तरह से अगर देखा जाए ये बाउंड्री थी मैदान में, लगभग 54 नजर आ रहा था, लेकिन ऐन मौके पर जो ग्राउंड, और देखिए ये भी 25 के माध्यम से आप सब कुछ देख रहे हैं, एकदम पानी की तरह क्लियर सब कुछ है। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के दिन पर, आज भरत अर्कस नहीं है, सब कुछ दावेदारी नीतीश है। नीतीश सर आपका भी स्वागत इस मैच के दरमियान। ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, बिल्कुल अपने आप को वहां पर बचा के रखा, ऑफ के लाइन पर, बिल्कुल लाइन पर थी गेंद, दबोचा वहां पर। देखिए कभी कभी होता है ना, आप हमेशा देखते हैं आजकल जो स्पिनर है, स्पिनर कल आपने देखा एक स्पिनर ने क्या तेज गेंदबाजी की, 2 गेंदें छूटी विकेट कीपर से, सिर पर टकरा गई जाकर पीछे बैनर पर शौरीन की। और अच्छा बैकफुट पर स्पंज किया वहां पर, फील्डर है वहां पर। एक बहुत सुंदर शॉट लेकिन उतनी कारीगर फील्डिंग मैदान पर। देखिए एक बड़े शॉट के बाद आप अपने आप को बिल्कुल वापसी करते हैं स्ट्राइक पर, जो कि इस वक्त मंदार मैदान में, मंथन मैदान पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है वो। और इस बार सीधा बल्ला, सीधा लाइन तलब, गेंद शरीर पर टकराई गई। देखिए ये महसूस कर रहे हैं वहां पर गेंद लगी है, अंपायर थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, इससे पहले अंपायर को लगी थी गेंद। आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, देखिए सीधी गेंद लगी शरीर पर और वो देखिए चेहरे पर हल्की सी दुखद समाचार का मुस्कुराहट। हमेशा देखते हैं ना, ये दुखद नहीं, वो खुशी का माहौल था मैदान पर। इस बार ड्राइव किया गेंद को, सुंदर टाइमिंग के साथ वो सिंगल निकलता हुआ, 1 रन के साथ 84 पर
पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। स्टेट लीग जो कि प्रतियोगिता चलती हुई मैदान पर लीग स्टेज के मुकाबले, लीग नहीं माफ कीजिए, नॉकआउट है ये मुकाबले, हारने वालों को वापसी का मौका नहीं मिलेगा। और इस बार सीधा खेला कवर पर, क्योंकि खिलाड़ी तो सब पीछे है, इसलिए शायद आराम से इक्का दुक्का बनता हुआ 1-2 के साथ 85 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 8 ओवर का मैच में लगभग 8 से भी ऊपर रन रेट मैदान में चल रहा है। मतलब यहां से अगर बात बताई जाए तो ओवर्स बचे हैं और एक बेहतरीन माहौल, विकेट बचे मैदान पर। टॉस जीता स्पोर्ट विक टीम ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। पार्टनरशिप बन चुकी है 85 रन की 8 ओवर में, एक बहुत सुंदर पार्टनरशिप। और दूसरे से तेजान टीम जिन्होंने आज टॉस हारकर पहले बॉलिंग करे। अब तक की कहानी की अगर बात बताई जाए ना तो सफलता एक भी नहीं मिली मैदान पर। हमारे साथ समालोचन कक्षा में आज जो कि राज बांदोड़कर और गोवा के सबसे बेहतरीन समालोचन जो कि हमारे साथ आज जुड़ से सर हरीश काकुड़कर सर, आपको भी नमस्कार इस मैच के दरमियान। खास हरीश सर की आवाज आप सुन सकते हैं इंग्लिश में, एक मधुर आवाज, जो आवाज गुजरात में गूंजी थी एक बड़े लीग स्टेज पर। ओ सीधा सीधा खेला वहां पर, बहुत सुंदर। देखिए बहुत बार हम कहते हैं ना, आपको बिल्कुल सोच विचार करना पड़ेगा। अच्छी गेंदों को सम्मान, खराब गेंद का बिल्कुल समाचार। और पता है कि अगर 7-8 हो चुके हैं, मतलब 20 ओवर का मुकाबला अभी तक और बचे, शायद थोड़ा सा रुका जाए, पार्टनरशिप को एक बड़ा बनाया जाए। यहां से फिर से लाइन देखिए, बहुत सुंदर बैक टू बैक दूसरी डॉट गेंदे। और गेंदबाजी पर रुपेश मैदान पर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, तगड़ा बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है, ऑलराउंडर की भूमिका इस टीम में। और क्या माहौल बनेगा यहां से इस खेल का। और इस बार ताकत लगाई शॉट के लिए, बिल्कुल ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सी मारेगा, पर थोड़ा कदम बढ़ाया वहां पर, शॉट के लिए अपने आप में एक जगह ढूंढी वहां पर। एक ही रन वहां पर बनता हुआ, एक रन के साथ 86 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हो इस मुकाबले का 9वें ओवर का। स्पोर्टविक टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय अभी तक तो सही लग रहा है। देखिए 10 विकेट हाथ में है, इसके बाद 10 ओवर बचे हैं मैदान में। पार्टनरशिप हो चुकी है 86 रन की। और रुपेश गेंदबाजी के मोर्चे पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी मंथन जो कि स्ट्राइक पर। ओ इस बार कवर पर वो हाथ देखिए हटाया वहां से लाइन से, शायद लगी है गेंद हाथ पर। आखिरी समय पर हाथ डाले ना डाले इस सोच में हाथ में हाथ थोड़ा सा डाला, लेकिन वो लूज रखा, इसलिए शायद गेंद थोड़ी सी लगी उंगलियों पर, लेकिन ठीक ठाक है, आलबेल है सब कुछ। स्पोर्टविक टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 87, जो कि अब स्ट्राइक पर पहुंचेगा। शॉर्ट गेंद, पुल किया गेंद को, हालांकि शॉट बहुत तेज था, थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई लॉन्ग पर, लेकिन जब तक बैकअप हो पाएगा। एक ही रन वहां पर बनता हुआ, एक रन के साथ टीम का स्कोर 88 रन पर। 9वां ओवर चल रहा है इस खेल का। देखिए रुपेश पर अटैक करने का प्रयास हो रहा है मैदान में। अभी तक रुपेश ने अच्छी बॉलिंग की मैदान पे। और इस बार बिल्कुल सहलाती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पॉइंट पर खेला, गेंद को हल्के से बेलने पर ऊपर लगी गेंद। कुछ पल अगर आप बताई जाए तो बिल्कुल लगा वहां पर बल्लेबाज को, हवा में गेंद निकल सकते हैं, लेकिन गेंद थोड़ी सी हवा में निकलने के बाद पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ पहुंची है। अब 9 ओवर का खेल ये समाप्त हो चुका है। 88 पर पहुंचा टीम का स्कोर। स्पोर्टविक टीम पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीत कर इस मैच में, और तेजान टीम जो इस समय पर बॉलिंग करे। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली इस मुकाबले में।
स्ट्राइक पर सनत मैदान पर, 54 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। अरे उनको देखकर ये लगता है कि टीम डेविड की हरकत का टीम उतनी लग रही वहां से। आक्रामक खिलाड़ी बल्लेबाजी में बिल्कुल ताकत लगाने का हमेशा प्रयास करते हैं, और देखिए कुछ टाइमिंग वहां पर भी देखने को मिली, और बड़े शॉट लगाने की जो क्षमता इनकी है वो काफी बढ़िया मैदान पर गेंदबाजी में तब्दील हो चुके। शॉर्ट गेंद पुल किया सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर निकला मैकवा सिक्सर मैदान में। देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी, अगर बात बताई जाए ना तो उतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी, लेकिन जो सेट है खिलाड़ी, सेट खिलाड़ी के लिए ये आसान होता है बैटिंग करना खासकर, और यही कुछ बता रहे वहां पर। एक शॉट बड़ा निकला, 60 रन की एक अभिजीत बारिश खिलाड़ी की जो इस समय पर बैटिंग कर रहा है स्ट्राइक पर। फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से इस बार खेला गेंद को स्क्वायर लेग के बगल से गेंद निकली है सीमा रेखा। देखिए पोजीशन कितनी जल्दी बनाती है, शॉट उतनी नहीं थी गेंद, थोड़ी सी बिल्कुल पैर की तरफ मारती, लेकिन जल्दी पोजीशन पर आ गए। ऑफ टर्न के बाद बिल्कुल शरीर झोंकर ऑन साइड पर सिर्फ गैप ढूंढा वहां पर, और इस चौवे के साथ 98 रन की भागीदारी। पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है अभी तक, रोहित बता रहे, रोहित के साथ नीतीश भी बता रहे वहां पर, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस लीग, इस प्रीमियर लीग की। स्टेट प्रीमियम लीग 2025 का पड़ाव इस खेल में। ओह बिल्कुल पीछे हटकर गेंद को खेला गया, ड्राइव किया सीधा कारपेट के साथ गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, 1 रन निकला, 99 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अब मंथन पहुंचेगा स्ट्राइक पर, जो लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है। मंथन 33 पर बैटिंग करता हुआ, और सनत जो कि 65 रन पर बैटिंग। टीम का स्कोर 99 की पार्टनरशिप हो चुकी है। क्या 100 की पार्टनरशिप या उससे भी ज्यादा ऊपर या आक्रामकता दिखाई जाएगी इस खेल में? ओ संभाला वहां पर अपने आप को, बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट। देखिए जानते हैं कि प्रतियोगिता में अगर आपको बहुत रन बनाने 200 बनाने हैं तो आपको इस पल थोड़ा रुकना पड़ेगा, सेट होकर मैदान में खेलना पड़ेगा। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, गेंद को पॉइंट किया, बगल से निकली, पीछे खिलाड़ी है, लेकिन 100 रन की पार्टनरशिप, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पार्टनरशिप के लिए। एक बड़ी पार्टनरशिप इस सुबह के इस माहौल में। और प्रतियोगिता में रोहित जानकारी दे रहे हैं, पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी है ये इस खेल में। अब तक की रिकॉर्ड है चौगली टीम का 103 रनों की जो पार्टनरशिप थी। कप्तान और साथ साथ जो कि दूसरा खिलाड़ी, उनका कप्तान दर्शन और उनके साथ दूसरा दीपराज, माफ किए कप्तान नहीं थे, दीपराज थे वहां पर। अब सौरभ के बीच में क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ जाएगा? ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को खेलेगा सीधा ड्राइव का। अब देखिए खेल कितना, 100 रन अब पूरे हो चुके हैं, खेल समाप्त हो चुका है इस समय पर। 10 ओवर का मतलब आधे ओवर में जो होना है ना पार्टनरशिप, वो 100 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है। खेल बिल्कुल बड़ा हो चुका है, अब ओवर्स बचे 10 मैदान पर। और अगर बात बताई जाए तो 10 विकेट हाथ में है, मतलब आप जो सोच रहे हैं 200 के आसपास ये होने चाहिए रन मैदान पर। हमारे साथ जुड़ जाएंगे सर हरीश काकुड़कर अंतिम कुछ और के लिए। सर आपका स्वागत है।
Kai Warriors won the first game, whereas Chogole Sports Club won the second game. But it was not an imposing total that was on the board, posted by the side batting first. But here it looks to be a formidable batting lineup of Sportsweek, which already got a rollicking start by the left and right hand combination, who are in magnificent form. If we speak about Sanath Nevgi, he is in the top form of his life at the moment. Currently, he's blazing away. This is the phase where the bowling side has to come back and try to chip in one wicket. They just can't allow this partnership to blossom, because they'll be more dangerous in the next 3 or 4 overs. And if at all you are not able to pick up wickets the way the batters are batting at the moment, just chip in with few dot balls here and there. But the batters will think, yes, we have to go after the bowling, and maybe at that point of time they might play a false shot. That is what the batters hoping. This is T20 and it runs quickly, and for that matter, if not wickets, then just curtail the scoring instincts of the batter. You can see the ball slightly not coming onto the bat as compared to what it was coming with the new ball, trying to hit the ball still harder, keeping a little bit low as well. So it's important here to get your start with the new ball. That is in the air. That's a good effort by the short covers. The ball was traveling. He came down nicely to take the catch, but I think it felt a little bit short there. Ample of time. He could not find the space. Yeah, looking to go on the leg side. You can see he's gunning himself to go for the big one. He's launching there, but still the ball is not coming onto the bat, and they are trying to keep in the back of length area, somewhere just around outside the line. This is a pretty good over. Just the 2 runs conceded in the 5. This is exactly the phase I was talking about. Teejan Sports Pororim has to just peg away with this line and bowl at least 2 to 3 good overs. A single to finish over number 11. A pretty good over here from the bowler. Just the 3 runs conceded. 103 without loss at the end of 11. This entire MACQUA Cup is currently going on AB25. They're giving the live coverage of this entire competition. Started yesterday, and today being the first match here, Sportsweek won the toss, electing to bat first against Teejan Sports of Parvarim. So in comes Faizan into the bowling attack from the far end. Looking to go, and he gets it. He times it really well, and that's been heaved away on the leg side. It was right in the slot, and he was ready to go. So gets a boundary. Manthan moves on to 40 with just 28 balls. His partner is going a little quicker. So whenever the partners are going, you don't have to challenge the partner. Yes, the partnership is going in a very good manner. They're still getting the runs. So it's all about gelling well. It's all about understanding out in the middle. That's what cricket is. Straight down the ground. This might be another boundary. The fielder is running after the ball, but it is straight over the head of the bowler, spanking it with a clean strike. It's Manthan Khudkar with back-to-back boundaries. He's charging at the moment towards his half century. 44 in 29. So Manthan has decided, now I'm going to take the charge. My partner is already raced on to 66.
I'm already well set and is looking pretty good at that. Moving the feet very well, playing nicely. Swept away and swept towards the backward square leg for a boundary. So they are clueless at the moment where to set the field. So there's no one towards the deep backward square leg region. The fielder was in the short fine leg and short square leg, man in the short third man point and short covers. Another whack there. This time not middling the ball. Wide off long on will be stopped and a no ball. Oh my gosh. He's bowled a no ball at a time when he's been belted away for 3 boundaries, and that is not good here from the bowler. They are already leaking so many runs, and out of that now the free hit is coming the way of batter, and that to Sanath Nevgi. This is a mighty. This is a colossal hit. Watch out. The groundsman, the ground staff who was under the threat. This is humongous strike here. This man is in a tremendous touch. What a Midas touch that he's having. Not only here, I saw him in Kurcharam Gymkhana tournament. He's blazed away. He was looking good. They won 3, lost just 1, and went out of the championship just because of the overall net run rate. Then he came into Goichi League, was looking really good with that, was unlucky, was dismissed at the non-striker's end through a run out that was imposed as the ball was finger-tipped and going back to hit the stumps. So that's unlucky dismissal, but no doubt about the form that he's going in. The way he's batting at the moment, all the bowlers are really under the threat, and the figures are also under the dent from this boy. .72 he has raced on to. That's the reason why you should not bowl a no ball, especially to the batters, and 10 wickets in hand. So both the opponents are batting even in the 12th over. This is in the air. This might be a chance away from the fielder. And it also goes in the gap. He knows that he didn't middle that well compared to his liking. Inside out he wanted to go. The wide long off wanted to clear that fence, but still gets a boundary. Moves on to 76. This is a very, very expensive over. 24 runs already leaked from this over, and now there are chances that it might go for even more. Inside out, this might be a chance, and finally they have got wicket. He just wanted to once again belt it over long on region, straight, sliced it towards the short third man region, and finally happy faces in Teejan cricketers. But wow, what an innings this is from once again Sanath Nevgi, looking in a very, very good touch. And that's how we show the area of the range of shot he possesses on the leg side, on the off side, the drives, the cuts, the hooks, the pulls. He has been really good in this innings. So he goes back. The first wicket falls for Teejan. It's 1-2-7 for 1 at the end of 12. .127 for 1 at the end of 12. Shivam Yadav, I will come on to the
But he will be at the non-striking end. It was the last ball of the 12th over. Manthan is playing on 49 of 31. So he's batting well, batting for his half century as well. It's going to be Rupesh Naik who is going to continue with his bowling from round the wicket. Driven nicely, and that's a half century here. Second half century for the batters of Sportsweek. And the left-hander, the elegant left-hander who has represented Goa, Ranji, has also played an innings of substance here. And there is still a long way to go. Manthan knows it very well. He has lost his partner just a while ago. And he knows the importance of his role to take the game little deep and play a bigger innings here at this stage. Shivam Yadav will be facing first time in this championship. Gets himself off the mark immediately with a single of the very first ball. And that is how you got to do it in T20, not having too much of time. There are ample of batters still there. So you got to just rotate the strike and give strike to a better batter who's got well set. He'll be looking to get the boundaries because he's more capable of doing as he spent time on the wicket. .129 for one. Rupesh bowled a good over, the last one. Charging down. Never intended to play across. He just hits it straight. He knows that the ball is not coming onto the bat. And what Rupesh is doing is just landing the balls in the spots. And the batter knows when the ball hits those spots, it's not coming at a pace. So he is going towards the landing spot and just charging him. Maybe trying to get him off the track. Cut away nicely. Protection in the deep. Another single. Played well over there. Transferring from the front to the back and just gliding into that open space. He's been bowling really well. This spell from Rupesh Naik is far different compared to the other bowlers around of Teejan. Once again, inside out. Looking to charge down. And another single. An excellent spell he is in at the moment. Rupesh Naik not giving anything away. The 3 overs, just 11 runs for Bhatta. And he plays a lot of tennis ball cricket, but he will just love the way he has bowled in this spell. Against someone like Sanath Nevgi and Manthan Kutkar is never easy. But he just kept the balls in the right areas. And that is what leather ball cricket is all about. You don't have to do anything fancy. Know what is your job. Know what the surface is doing. How I'm going to be useful for my team on a wicket like this. There's something in for the bowler if you just bowl in the right areas. He's bowling in the slot. This might be another one, and that's been taken. So once again, back-to-back wickets. The previous over and now this over. He got the wicket of the last ball, and he got a wicket of the first ball of over number 14. So the leggy strikes. 132 for 2. Another well-set batter. Manthan Kutkar departs. Trying to go inside out, just not getting the middle of the bat, scooping one towards the short covers. So in comes Nagappa Kunnur.
They've got a pretty good, strong batting lineup. Sportsweek. They've got a strong left-hander, Ranji player, and Sanat Nevgi was represented Goa under. And now Nagappa Kunnur is also played up very well in the A division matches and the GCA matches as well as in the open tournaments. Plays more sort of leather ball cricket and backs a punch while hitting. A strong player coming at number 4. Important here at the moment for Teejan cricketers, they should know that they have taken 2 wickets and both opponents are being sent back in the hut. And it's important here to put pressure, little bit pressure on both these batters who have not spent too much of time. Nicely bowled. And he's not afraid to toss, he's not afraid to fly, and that's where he has been successful in getting those 2 wickets. It's a good sign of a bowler, although he was expensive in the first over. Looking to charge, this was in the air. Could have been caught and bowled. Difficult chance. The batter also hit it hard. Came charging, and the umpire is also in the firing line. Nowadays, not only the bowlers and the fielders' reflexes have to be good, but umpires have to be fit enough and with having good reflexes. Already having one example, the ball hitting the umpire just a while ago. The ball is turning, definitely turning. That's nicely played. Cutting away in between both those fielders. No chance. This is a quick outfield. This is really nicely played. Very well played. The ball turned sharply. It was a wonderful rip given by the bowler over there. And just watched it, cut it away, and finds the space between both the fielders. Beautiful timing. Not a bad ball at all. Just quick feet movement allowed to play him that cut shot. Shivam Yadav with his first boundary. Banging it hard, there's man down in the cow corner region, and that's been taken in that 3 wickets here for the leggy. He's enticing them to play for the big shots, to go in the air. They are taking that challenge, and he's been successful in getting the wickets. And that's why you need to fly the ball. That is what gives you wickets. So wrist spinner is turning out to be handy at the moment. And 3 down at 137 Sportsweek. So walks in Agildas Alambata at number 5. After a strong opening stand given by the openers. And then 3 wickets have been lost in almost, you can say, quick succession. Not a big partnership has been seen at this stage by any of the batters. Still a lot of time left. 6 overs after this one. Good comeback from Faizan. A lovely fly there. That's good to see, and that's a good sign of a bowler who always looks to pick up wickets. Another wicket for him has been successful. Slightly expensive might be in the first over, but this over he has been really on target. 2 wickets in this over and just the 5 runs conceded. 137 for 3 at the end of 14. So 53 runs in him in his 4 overs, but I think that 4th over was the best one that he bowled. 53 is way too expensive. He will be happy with those 3 wickets. And it's a learning curve. It's all about learning and bowling the right spots. Experience he will gain from this game.
He'll come back stronger the next one. Bharat has bowled really well. That same length he's been peppering. And good to see that he has bowled that same length and the trajectory, the line as well to the left-hander and right-hander. That is what all the other bowlers need to see. He's not express, but he just knows what is the job on this wicket. Lovely bowling, beautiful leg cutter here. Slowed it in the air with a leg cutter action. The ball just went away. He's using his brains nicely at the moment. He understands both the batters are new, so the feet movement is not as swift as compared to someone who has set. And that's why we say it is very difficult to score on a wicket. It always looks good when everyone is belting down, belting and hitting the ball, smacking it all over, especially Sanat or Manthan. Now it won't be that easy. This is a appeal, half-hearted, nothing from the bowler. Well, he never thought there is an edge there. So no support from the bowler to the wicket keeper, who was more sort of excited there behind. What a wonderful spell of medium pace bowling here from Rupesh Naik. But another slower ball. Once again, beaten the bat. Is beaten him on a couple of occasions. One for the seaming up delivery and one for that slow one. Excellent spell, excellent bowling here from Rupesh Naik. They are coming back strongly. Teejan cricketers, they understand that it won't be easy anything to chase 150 plus. That's why that opening stand was very crucial. And nicely played. This time slight width was given, so allowed the batter to free his bat on the offside. And a single to mark over number 15. Four overs, just 15 runs. How frugal is the bowling performance from Rupesh Naik, but it's been excellent when both the batters were taking the ball flying across the part. He just kept them quiet, and that is where the phase of taking the wicket has started, and they've got 3 of them. And so that is the end of 15, and it will be changing voice in the commentary. It's over to Raj for the next updates. So 441 runs on the board, loss of 3. Oh, shot into the gap. That's running down the track for foe. That's a MACQUA boundary you'll get here. Tremendous hitting from the champion. Clean as a whistle. Have a look at this on replay. 145 runs on the board with that boundary. Into the 16, 4 runs has been given. Dildas, the man on strike. What a shot from the champion. Another single. 46 runs on the board with that single. I would say what a great fight back from this fielding side. Tremendous. One stage they were looking like where those 2 batters were batting. Oh, shot straight down the ground. There's a fielder coming underneath. That's been taken. So they lost their 4th wicket over 146 for foul. What a bowling from the champion side.
One stage they were looking, they were taking the game away from them, but what a fight back from the fielder. Tremendous, another wicket. And now this time the Adil Das has been sent back in the pavilion. Sorry, Nagappa has been sent back in the pavilion. Ronak got a first breakthrough into his first over. 5 runs has been given on the wicket. Great start from the bowler there. 146 for 4. Venkat, the new batter. Off the mark for the single there. You can see 147 runs on the board with that single. Oh, chance of it will fall in the no man's land though. Bit fumble there from the fielder, just to take a single there. 148 runs on the board with that single. Sportsweek, they won the toss, they lack to the bat over here. Another single. I think the great fight back from the Teejan. After losing the toss, one stage they were looking like they were the way past 200, something like that. But great fight back from Teejan. 149 runs on the board, still 4 overs remaining. Manthan, what an inning from the champion there. Manthan, 52 from 36, and then that man, Sanat, has been changed the scenario of this match. 76 runs has been scored in those 42. It was a crucial partnership between those two batters opening. And then ever since they depart, and the scenario of the match has been changed. 149 for 4. Great fight back, I would say, from Teejan. And Hussain, the captain himself, is into the attack. Oh, good chance. Umpire wasn't interested in that call, you can see. This is keeper of the side. Into the 17th over in progress. 149 runs on the board. Loss of 4. Venkat, the man on strike. Another single. Leg by signal from umpire there. Rajesh Shignapurkar. Akil Das, the man on strike. And 150 up for these Sportsweek. Oh, excellent. I think there we go. Finger going up. Outside edge. What catch from the keeper. So one more wicket has been gone. 150 for 5. After playing such a wonderful cricket, they're just throwing things off over here. Sportsweek, they lost one more wicket here. 150 for 5. Teejan's, they've been really great fight back from this. What a catch from the keeper. An excellent delivery from the keeper there. 150 for 5. Goodness my, they're just throwing things off over here at the moment. After played some great cricket.
Ever since those two batters went in the pavilion, the scenario of this match has been changed straight away. Great fight back from Teejan's point of view. They're right back in this match now. Ever since Manthan and Sanath, Manthan along with Sanath, they put in some decent total on the board. Ever since those two batters back in the pavilion, the scenario of this match has been got changed. You can see they got some couple of wickets. And the 5 down now, 150 for 5. 16.3 deliveries. Another 3 overs remaining after this. 21 deliveries remaining from here. And a new batter. Love the mark with a single. Rumper up. The mark, and Venkat the man on strike now. 151 runs on the board. They have to play a sensible cricket here. They don't have to lose the wicket. Put some score on the board. Another single. They have to play a sensible cricket from here. Both batters are new batters in the crease. It's not easy. They're not the fresh batters in the crease. On the fielding side point of view, and they need one more wicket. Straight down the ground, the fielder will cut off. Another single. 152 runs on the board with that single. 153, sorry. It's a great over for the captain. 12 runs has been given in the bowl. 3 overs from the captain, 12 for 1. Excellent start from the captain. Ronak into the attack. 17 overs has been bowled, 153 for 5. It's a crucial time of the match now. Oh, slow change of pace there from the bowler. Direct hit. But what a running between the wicket. He was well home there. 154 runs on the board, a loss of 5. Harumper up. Goodness my. Just a bit fumble there, the keeper. Allow them to take their double. Couple of runs. Pata. Rupesh the fielder. And the 2 buys has been signalled from umpire there. Another single. The week, you can see this Sportsweek, they're just drilling things in 1s and 2s at the moment. There's not going for the big shots into the depth now. 2 overs remaining after these. 157 runs on the board. Oh, shot straight down the ground. Way she goes into the fence for 6. That's a MACQUA 6. What a shot from this fella, Parup. Have a look at this on replay. Straight down the track for 6. That's bang. 163 runs with that 6. Swing and a miss there. I'll get a couple of runs here.
Yes, the captain will cut off. Last delivery of the 18th over, 165 runs on the board. Oh, dancing down the track this time. The fielder is coming underneath there and has been taken. So Parab has been sent back in the pavilion. And they lost their one more wicket here. And of the 18, 165 for 6. And you better walk in the middle there, Kaushal. And they lost their 6th wicket, 165 for 6. They're just throwing things off over here. 2 overs remaining from here. Another 20, 25 runs will add to the total. Will be the decent total on the board. And they're just after in the commanding position. They're just throwing things off over here. Sportsweek's straight into the leg side there. Into the mid wicket, Bata, the fielder, Rupesh. Only single. Kaushal Singh, the man on strike. Haven't faced that. Just a new batter walks in and get a couple of runs here. Yes, good fielding in camera throw. They'll sell for 2. Good running between the wicket. And a great trade all around. 2 runs will add to the total. 168 runs on the board. We under a 19th over in progress. Boy, here we go. Another dot. Single, sorry. Well, couple of runs has been taken. Good running between the wicket. 170 for those 2 runs that will add to total. Teejan's point of view, a great fight back from this champion side. Another single. Good throw from the fielder. This is the 4th over from the captain. You can see only 18 run has been given. And a wicket for the captain. He'll be very pleased with his performance, especially in the ball. Another single. 172 runs on the board with that single. And the last delivery, I think. Change? One delivery limiting of this 19 over. 172 runs on the board, loss of 6. Still one more over remaining after this. And the batting point of view, they need to shuffle the gears. It's only one more over remaining after this. Straight down the ground. It's going very quick there. Good fielding from the fielder, I would say. The running for second run. Terrific running between the wicket. Excellent create. So end of that 19 over. With a couple of runs and the score moves to 174 runs on the board, a loss of 6.
Way into the final over. Ronak will bowl the final delivery. Oh, shot into the gap. There's a fielder down there, will cut off on the mid wicket. In come to the self for 175 runs on the board with that single. Kaushal, the man on strike. Oh, shot. He's a fielder is coming up. It just fell short though. Another single. 176 with that single. Oh, shot into the gap. That's traveling. A good fielding once again. Tremendous work from the fielder. In come the throw. 77 runs with that single. 3 deliveries remaining of this final over of this first inning. Another single. Yes, no, send back. 178 runs on the board. Couple of deliveries remaining of the first inning. Sportsweek 178 run has been scored in this first inning. Still 2 over deliveries remaining of the final over. Another single. Will Kaushal will sing, will finish things in a style over here for the Sportsweek. Last delivery of the first inning, 179 for 6. Oh, shot. There's a fielder, will cut off. Goodness, my, what a catch. Is he dropped? But a great effort from the fielder. In come the throw. Oh, that's it. End of the first inning. Have a look at this. Well try there from the fielder there. Great effort. But didn't carry. 181 runs on the board. When they'll come out this station, they'll require 182 runs the target. And that's it from the commentary box. Stay tuned.
ओके, धन्यवाद सभी का स्वागत इस मैच के दरमियान। अंपायर का इशारा आ चुका है। ओके, अंपायर रेडी, हमारा स्कोरर भी रेडी। तमाम चैनलों को सभी का स्वागत मैदान पर। इस वक्त स्टेट प्रीमियर लीग इस वक्त खेल चलता हूं मैदान पर। ओह, तेज गति, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर रखा है इनको, ज्यादा गेंद बाहर निकली, वाइड के साथ स्वागत मैदान में। स्पोर्टवीक टीम ने पहले टॉस जीता, बैटिंग के मैदान पर, और पहाड़ की तरह स्कोर रखा सामने 182 रन, जो कि 82 जी से पीछे रखे। उसके जवाब में जो कि तेजान टीम बैटिंग करी मैदान पर। ओ, फिर से बीट किया वहां पर, बहुत सुंदर लाइन मैदान, टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला वहां पर। देखिए गति, देखिए वहां पर टप्पा खाते गेंद हल्का सा काटा बदला, जो अम्मन गेंद ऑफ के बाहर निकलती है गति के साथ गुजरी, और जब तक बिल्कुल पैर लाते सामने बल्ला चलाते तब तक शायद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। इसलिए गति सबसे अहम रहेगी आपके पास, गति का फर्क रहेगा, और वही फर्क देखने को मिलता है उस मुकाबले में। ऑन साइड पर बिल्कुल लहरा सहला शॉट को लेग ग्लांस करते हुए मैदान पर गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। चौवा निकलता मैक्वा लिख, जो कि चौवा मैदान पर इस मैच के दरमियान निकलता हुआ। मैक्वा बाउंड्रीज निकलती पहली ही बार, मतलब 5 विकेट। लाइन सबसे अहम थी आपकी, आप थोड़े से राउंड विकेट से ओवर द विकेट से जो कि बिल्कुल लेग स्टंप पर चले गए, और लेग स्टंप पर जैसे चले गए ना, हाथ खोलने का पूरा मौका, अवसर मिला बल्लेबाज को। 5 टीम का स्कोर। ऑफ टर्न के बाहर कट किया गेंद को, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मैदान में। देखिए यही फर्क होता है, कभी कभी गति आपकी बहुत कारीगर रहती है, लेकिन कभी कभी आपको गति आपकी बहुत नुकसानदायक। इस बार देखिए बैकफुट पॉइंट पर कट का वो शॉट, बिल्कुल अपने पॉपिन किस में खड़े रहकर क्या शरीर के करीब लिया गेंद को, और क्या खूबसूरत एक लहराता सहलाता मैक्वा चौवा मैदान पर। ओह, लाइन को दूर रखा, पीछा क्या उस गेंद का, थोड़ी ज्यादा बाहर रखी इस बार गेंद को। देखिए एक गेंद जो लेग स्टंप पर डाली आपने, जहां पर आपको हाथ खोलने का मौका मिला, दूसरी गेंद आपने ऑफ स्टंप पर शॉट डाली, उस पर तीसरी गेंद देखिए आपने ऊपर किया। शायद मानसिकता ये बता रही थी बल्लेबाज की, पता था कि उनको ये गेंद ऊपर आएगी, बल्ला बहुत तेज घुमाया, लेकिन गेंद बगैर किसी साथ नुकसान के साथ निकली विकेट कीपर के हाथ में। पॉइंट शॉट कवर पॉइंट मिड ऑफ, ये कुछ खिलाड़ी है जो ऑफसाइड पर रखे जा चुके हैं इस खेल में। ओ, इस बार वो बिल्कुल क्या शरीर पर लगी या फिर बल्ले पर, अचानक से गेंद शरीर के करीब अंदर आती हुई जल्दी तेज गेंद निकली। देखिए हम बात रहे आपको यहाँ से, कितनी गति इनके पास है। 9 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर, बाउंड्रीज लग चुकी है, और शुरुआत के माहौल में जो गंदर की तरफ गेंद आती है बाहर जाती है, ये परेशानी का घेरा। एक तेज गेंदबाजी मैदान में इस वक्त इस शुरू के माहौल में। ओह, इस बार देखिए क्या वहां पर खूबसूरत बॉलिंग मैदान में, गेंद टप्पा खाते निकली सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में, और गेंद निकली बिल्कुल डॉट, और डॉट के साथ ही पहला और समाप्त हो चुका है। देखिए किस तरह से गेंद अंदर की तरफ आती है, थोड़ी सी शरीर के बिल्कुल करीब से खेलने का बना, थोड़ी सी बाहर निकली गेंद टप्पा खाते, आउट स्विंग गेंद। देखिए ये खासियत है इनकी गेंदबाजी में, गति के साथ गेंद को बाहर अंदर घुमाते, इसलिए शायद मुश्किल नहीं रहता हमेशा उनके लिए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए परेशानी का सबक हो सकता है। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर। अंपायर की जोड़ी राजेश सिग्नापुरकर, जो कि इस वक्त बैटिंग एंड पर, वामन मलेकर सर जो कि इस समय पर बॉलिंग एंड पर, अंपायर की जोड़ी, और तीसरे अंपायर हमारे साथ उदय नाइक सर जो कि जुड़ चुके हैं, उनको भी स्वागत मैदान पर। स्कोरिंग पर रोहित, उनके साथ आकाश लीडर स्कोरर, और AB25 के माध्यम से आप मुकाबले देखें यूट्यूब पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेश, और उनके साथ कैमरामैन की भूमिका में अश्विन राज मैदान पर। आपका भी स्वागत कमेंट्री कक्षा में। आज खास सावरने से हमारे करीबी दोस्त सर हरीश काकुड़कर, उनके साथ हमारा करीबी दोस्त राज बांदोड़कर, जो कि इस वक्त आपका भी हार्दिक स्वागत इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर बढ़ चुका है, 9 पर पहुंचा है
टीम का स्कोर। खेल समाप्त हो चुका पहले ओवर का। लक्ष्य बहुत दूर का 82 विन है, 182 रन मैदान में, मतलब दिल्ली बहुत दूर है मैदान में। ओह, पहली गेंद दीपक की बहुत तेज निकली, शायद थोड़ी सी बिल्कुल मुस्कुराहट। ओ, थ्रो निकला, सीधा निकला, मामला थोड़ा सा 19-20 का निकला और 22 के रूप में वो रन निकलता मैदान में। विकेट कीपर के पीछे स्लिप के खिलाड़ी अगर सीधा थ्रो कर पाते, नॉन एंड पर थ्रो थोड़ा सा रिले हुआ, दूसरे खिलाड़ी ने लपका, उसके बाद स्टंप पर लगा और सीधा थ्रो आता था तो शायद मुश्किल था वहां पर। एक सिंगल निकला, 22 के रूप में 10 पर पहुंचा है टीम का स्कोर और स्ट्राइक पर अब पहुंचेगा अथर्व मैदान पर। ओ, फिर से टप्पा खाते गेंद ने थोड़ा काटा बदला और बाहर की तरफ निकले। देखिए ये खास बात है, कभी अंदर कभी बाहर ये गेंदों को घुमाते हैं और देखिए ये परेशानी का घेरा है। और जब भी गेंद अंदर आएगी, जो हम बात करते हैं ना हिटमैन की, अंदर आती हुई गेंद को शायद हिटमैन बिल्कुल संभाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। कुछ अगर उस तरह से अंदर आई गेंद तो शायद संभालना मुश्किल हो जाएगी इस गति के साथ। लेकिन हिटमैन की अंदाज ही अलग है, उनका वीक जोन है वो उनका बिल्कुल स्ट्रांग होता है हमेशा। और ऑफ स्टंप के बाहर से कट किया, गेंद को पॉइंट को पीछे रखा, एक रन वहां पर निकला। सिंगल के साथ 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। स्पोर्टविक टीम पहले बैटिंग कर चुकी है, 81 बने, 82 का लक्ष्य रखा सामने, 182 का। जहां पर सवाल बहुत बड़ा है जो कि तेजान टीम ने 182 का पीछा करती हुई मात्र 11 पर पहुंची है। कोई नुकसान के सामने वाली टीम ने अगर आप बताएं तो पार्टनरशिप पहले 10 ओवरों में 100 की हुई थी और उसके बलबूते पर रन बनाए गए थे मैदान में। और ऑफ स्टंप के बाहर लाइन को दूर रखा शरीर के, एक सुंदर बॉलिंग मैदान में। हर वक्त हम बात बताते रहते हैं, बहुत सा सुंदर माहौल रहेगा। देखिए गेंदें कहाँ जाती है, ऑफ स्टंप के बाहर कितनी, अंदर बाहर, ये सब कुछ देखा जा रहा है मैदान पर। ओह, बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, फिर से डॉट के निकलती हुई। प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ मैदान के, डॉट गेंदों का असर हो रहा है मैदान में। ये देखिए गेंद टप्पा खाते उछाल लिया, अतिरिक्त बाउंस लिया, उछाल के साथ निकले, परखना बहुत मुश्किल था उस गेंद को। शायद वही खड़े खड़े अगर शॉट पुल करते तो मिस टाइम हो जाती, पॉइंट पर खड़ी हो जाती गेंद। ओह, बिल्कुल बढ़िया। शायद तो पैर पर पहले लगी, हल्का सा अपील होगा, लेकिन हाइट जो सबसे इश्यू था। देखिए किस तरह से माहौल बना मैदान में। देखिए गेंदबाज दौड़ रहे राइट हैंड ओवर द गेट से। हाँ, शायद हाइट और लेग स्टंप के बाहर रही है, लेग स्टंप के बाहर रही है गेंद। शायद वही अंपायर ने इशारा कर दिया, नॉट आउट का मतलब और समाप्त हो चुका है दूसरा। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 11 रन पर। इस ओवर से निकले 2 रन, यहां पर एक 22 और एक बल्ले से सिंगल मैदान में। अथर्व 8 गेंदों में 9 रन। सर्वेश ने अभी तक खाता नहीं खोला 4 गेंदों में, एक 22 के रूप में उनके खिलाफ रन आया था। और अथर्व के सामने वही गेंदबाज तेज बता रहा मैदान पर। और पिच गेंद ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर लॉन्ग ऑन के बिल्कुल करीब गेंद। देखिए पैड लाइन पर थोड़ी सी गेंद बिल्कुल मैं कहूँगा उतनी खराब नहीं थी, लेकिन पैड लाइन पर जब आप गेंद करेंगे तो शायद मुश्किल नहीं होगा। हम बहुत बार कहते हैं भारत के खिलाड़ियों के पास अगर पैड लाइन पर गेंदबाजी करते हैं तो दाल रोटी वाला शॉट, मतलब जो हमेशा खाते हैं ना आप, वही अंदाज का शॉट था। शायद आप पैड लाइन पर आप गेंदबाजी करते तो मुश्किल नहीं रहेगा आप में बैटिंग करना। और शायद गेंदबाज वहीं पर चलेंगे पैड लाइन पर जहां पर मुश्किलों का साथ मिलता हुआ आसान हो रहा है मैदान पर।
ओ बिल्कुल बढ़िया, पीछे हटकर हल्के से पुश किया, ऑन साइड पर शॉट स्क्वायर लेग हम्पर के ठीक बगल में गेंद को रोका गया, वहां पर रन वहां पर एक नहीं मिलेगा। देखिए अभी तक की कहानी क्या है मैदान में, अगर बात यहां से बताई जाए तो बिल्कुल पार्टनरशिप 14 गेंदों में 12 रन की हो चुकी है। लेकिन अगर दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप अगर 50-55 की पहले विकेट के लिए हो जाए तो बाद में वो जो बड़ा टोटल है वो आसान लग जाएगा। लेकिन शुरू किया वो छोर में अगर विकेट निकलते तो प्रेशर बढ़ेगा। और पीछे हटकर हल्के से खेला गेंद को। देखिए आखिरी समय तक गेंद को अपने शरीर की तरफ ले रहे, आखिरी के समय पर बल्ले का मुंह खोला लेकिन गेंद जहां जानी थी वहां गई नहीं, टेस्ट टकरा गया कर बल्ले से। देखिए ये फर्क पड़ता है, गति जब आपके पास हो ना तो आपको पहले 2 शॉट देखिए, एक पॉइंट पर एक स्क्वायर लेग पर जो शॉट खेले गए वो लाइन से भटके गेंदबाज इसलिए शॉट खेले गए। अब देखिए आप ठीक ठाक बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग हो रही है, जहां से हटकर खेलना मुश्किल हो रहा है, शायद कुछ अलग करना पड़ेगा, अटैकिंग बैटिंग अगर करनी है इस शुरू के मॉल में तो। लो फुल टॉस, गेंद को खेला, कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मैदान पर। मैकवा चौवा निकलता इस मैदान में, इनिंग का तीसरा चौवा निकला और तीनों चौवे एक ही बल्लेबाज ने शायद लगाया मेरे नसीब। देखिए लो फुल टॉस से टाइम किया गेंद को, क्या खूबसूरत एक्स्ट्रा को और सीमा रेखा से बाहर गेंद निकले और कितनी तेज निकले शॉट में, ताकत बहुत थी, टाइमिंग तब। अब सर्वेश ने खाता खोला, चौवे के साथ 7 गेंदों पर चौवा सर्वेश ने लगाया, चौवा 16 पर पहुंचा है टीम का स्कोर स्केल में। वापस विक्रांत, ओ फिर से ऑन साइड पर। अब देखना पड़ेगा क्या बल्ले पर पहले लगी या नहीं, मिले 22 के रूप में। देखिए हमने शुरू में कहा था आप अगर पैड लाइन पर बॉलिंग करेंगे तो बल्लेबाजों के लिए उतना मुश्किल होगा नहीं। ये आप बहुत बार देखते हो विराट कोहली को अगर पैड लाइन पर आप बॉलिंग करते तो उनके लिए वो दाल रोटी वाला शॉट रहता है, हमेशा आसान होता है उनके बैटिंग करना। और किसी भी खिलाड़ी को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आपको पैड लाइन पर बॉलिंग करनी है। देखिए खिलाड़ी अगर सेट हो जाता है तो उसी के पर बात में छक्का लगाएगा, आपको लाइन ऑफ स्टंप के बाहर ही रखनी पड़ेगी जहां से आपके पास जो गति है ना उसका फायदा हो जाए। ओ आगे बढ़ रहा है कदम, हवा में खेला शॉट को लेकिन खिलाड़ी से बहुत दूर गेंद, कवर बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन मैदान में। ये देखिए शॉट देखिए किस तरह से माहौल बना वहां पर शॉट का। ये देखिए बिल्कुल कदम बढ़े, आगे चले गए, हवा में खेला, 30 यार्ड सर्कल को पार करना और खिलाड़ी के काफी ऊपर से गेंद निकली और कवर खिलाड़ी के ऊपर से निकली गेंद, कवर बाउंड्री लाइन के बहुत दूर, मैकवा चौवा मैदान पर निकलता हुआ और ये चौवे के साथ 21 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैच में। पहले 3 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है, 3 ओवर में 21 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, 7 रन प्रति ओवर मैदान में बन चुके हैं। मौजूदा रन रेडी है, ओ पीछे हटकर हल्के से खेलेगा। देखिए तेज गेंद स्टंप की तरफ आ रही है, हल्के से गेंद को बल्ला सामने रखा लाइन के। और ये सबसे अहम बात कि आप बल्ले के अगर बीचों बीच देते तो ये बात तय है कि आप किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं मैदान पे। क्रिकेट मैच में बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूं भाई फॉर्म का होना बहुत जरूरी है और फॉर्म का होना है इसलिए शायद मैं कहूँगा अगर फॉर्म में आप हो तो शायद आपके लिए 2-4 गेंदें डॉट निकली तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ फिर से गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर गार्ड लेकर बिल्कुल वही से शॉट पर ताकत लगाने का गेंद पर प्रयास किया, गेंद थोड़ी नीचे रही, इस बार छकाया गेंद ने विकेट कीपर के लिए मौका मिला गेंद रोकने का, डॉट गेंद निकली और खेल चलता हुआ 21 पर कोई नुकसान नहीं। 182 चेस करने अंतिम जो कि 20 ओवर में उसका पीछा करती हुई, तब अगर बात बताए 3 ओवर के बाद 21 ये हालात है मैदान पर। ऑफ स्टंप पर गेंद को कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर उतनी अंदर आई गेंद शरीर के करीब और बिल्कुल क्या वहां पर कट लगा, अरे ये फर्क पड़ता है। आपका बल्ला के बिल्कुल खुला, वहां पर हाथ खोलने का मौका जरूर दिया गया लेकिन शायद खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे।
लेकिन गेंदबाज भी जानते हैं कि विकेट ही क्रिकेट में, पावर प्ले में आपको अगर 2-4 विकेटें मिलेंगे सामने वालों के लिए बिल्कुल मुश्किल होगी बात में आपसे करना। पावर प्ले अगर अच्छा गुजर जाएगा, भले 40-45 का हो, लेकिन पावर प्ले शायद विकेट बचते तो मुश्किल होने वाली है मैदान पर। ओ शायद के लिए स्टंप पर ये गेंद, फिर से पैड लाइन पर गेंद, शायद क्या होगा इशारा अंपायर का, लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ 22 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओह फिर से बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, उछाल, सबसे अहम बात है देखिए क्या वहां पर हुआ, हम आपको फिर से बताएंगे किस तरह से माहौल बना मैदान पे। देखिए क्या वहां पर हुआ, गेंद कितनी तेज निकली, टप्पा खाते गेंद ने क्या काटा बदला वहां से। ओ इस बार पॉइंट पर कट किया गेंद, पॉइंट खिलाड़ी पीछे रखा। देखिए गेंद ने उछाल लिया, उछालती हुई गेंद को बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। देखिए पीछे खिलाड़ी मौजूद है, टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन पर। चार ओवर खेल समाप्त हो चुका है, 23 मैदान पर। तेजान टीम 182 का पीछा कर रही है 182 का। उसके जवाब में अगर बात बताई जाए तो पावर प्ले के ओवर्स की अगर बात बताएं तो 4 ओवर हो चुके, 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर जो 7 का रन रेट था। अब लगभग 5-50 फिर 6 का आ चुका है मैदान में। अथर्व बैटिंग करते हुए मैदान पर 15 रन पर 7 दे रहे, सर्वेश मात्र सिर्फ 4 रन पर, उसमें एक बाउंड्री शामिल है। अब स्ट्राइक पर बैटिंग करेंगे अथर्व मैदान पर। अब नया गेंदबाज वैभव मैदान में, अथर्व स्ट्राइक पर है, सेट है खिलाड़ी, दोनों सेट है खिलाड़ी, स्पिन को लगाएगा। देखिए तेज गेंदबाज इस्तेमाल किए गए, वहां पर विकेट नहीं मिला, रन बनते गए, हालांकि उतने तेज नहीं लेकिन 6 रन प्रति ओवर बनते गए मैदान में। लेकिन दूसरों से देखा जाए तो विकेट चाहिए, स्पिन को लगाएगा मोर्चे पर। ऑफ टर्म के बाहर से लपेटा, मिड विकेट सी मारेगा पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। देखिए ऑफ टर्म के बाहर से स्वीप किया वहां से। आजकल सूर्य कुमार यादव ये शॉट बहुत अच्छा खेलते और बहुत पहले शुरू में बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन आज के लिए बहुत अच्छा खेलते और ज्यादा वहीं पर रन बनाए जाते उनकी तरफ से। गुगली हो या बिल्कुल लेग ब्रेक हो, गेंद को बिल्कुल बल्ला तेज घुमाते हैं और लाइन के मतलब घुटना टेकने के बाद जो शॉट था मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए आसान हो रहा है। पीछे हट के वहां पर कट किया गेंद को, वाइडिश गली का खिलाड़ी मौजूद है, रन वहां पर नहीं, मुश्किल था वहां पर, शायद थोड़ी सी अगर गफलत हो जाती तो मौका था रन आउट करने का। 24 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। देखिए शुरू के माहौल में पावर प्ले में आपको जो अटैकिंग बैटिंग चाहिए वो देखने को अभी तक नहीं मिली है। कदमों का इस्तेमाल किया पर शायद चूके लाइन से बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान में। इस बार शफल क्या शॉट के लिए जगह ढूंढ रहे, स्पिन के खिलाफ खेलना इतना आसान नहीं था। हम बहुत बार कहते हैं ऐसे मैदानों में जहां पर मुश्किल होता है स्पिन को रखना। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, मौका मिला हाथ खोलने का, गेंद निकली पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मैदान पर।
ओह बढ़िया लाइन वहां पर, एक बाउंड्री से इस समय खर्च हो चुकी है, 28 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। ये देखिए गेंद लेग ब्रेक, गेंद टप्पा खाते, गेंद ने हल्का सा काटा बदला, गेंद ज्यादा घूमेगी तो उतनी परेशानी नहीं करेगी। ओ फिर से गेंद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, क्या और निकला, ये सिर्फ 5 रन का ये और निकला इस इनिंग में, और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 28 रन मैदान पर। देखिए 182 का सवाल है मैदान में, जिससे पीछे अभी भी काफी बचा है और खेल मैदान में 15 और कम, और उसके बाद अगर बात बताएं तो 10 विकेट हाथ में बचे। लेकिन जब तक गेंदबाजी में तब्दील होगी, आइए हमारे साथ जुड़ जाएंगे सर हरीश काकुड़कर। सर आइए, स्वागत है आपका। Five overs, 28. Not exactly the rate that is required. They need to go at a little faster pace. Here is the Goa's fast express, the pace battery. Here Parab has been asked to go for one more over, was considered 9 runs in the previous one, and so this is going to be the last over of the mandatory power play overs with fielding restrictions. No, this is too much pace to handle at the moment. Trying to give himself a little bit of room on the leg side. The bowler bowl a pretty good line just outside. Goes straight into the gloves of the keeper. So again, slightly more closer towards the body, flicked it on the fine leg region, straight to the fielder in the short fine. 3 dot balls at the moment played by Atharva in this game, in this over. If you look at about the progress of this team, Teejan, they certainly know it's a little difficult task. Maybe they are trying to see off this new ball. The best time I feel is scoring with the new ball. It's too much at the moment. They must not have faced someone like Hiram too much in their career at the moment, because he is troubling even the best batters. We see Hiram coming and bowling to some of the Australian players, even in some of the other tournament, where he just pushes them a little back with his length, with his pace, and with his height. He's going to get a little bit more bounce and purchase from on any wicket. Nicely bowled, fuller length, surprise. Maybe trying to feel that I'm just going to bowl the back of length, just try to maybe fire on the toes. The smart bowler always, it keeps on thinking. Has improved as a batter as well here. That's what we are witnessing nowadays with his hitting abilities, using the long handle to very good effect. 29. This is in the air, not timing, and it's just easy catch down towards the mid-off region. Was very late to play that, where the bouncer just climbed on, and an effort ball from Hiram getting him the wicket. That's the first one going down. So Sarvesh going back to the pavilion, and is 29 for 1. What a good over this has been from Hiram. Bowled and peppering with that back of length. Just considered 1 run better, felt the need of going for maybe a boundary. This was the last ball of the power play overs that finished, but wicket also lost. 29 for 1, Teejan cricketers. Well, you can see also the scorecard. I was just looking at the scorecard of Sportsweek.
Manthan Khudkar getting 52 of 36, laced with 8 boundaries and 1-6. Sanath was explosive as usual, 76 of 42 with 9 boundaries and 5 sixes. But after that, once the opponents had gone back to the pavilion, Shivam Yadav with 6, Nagappa 3, Agildas 8, 9, 11. That's the scorecard. What do you see? So the rest of the bet is a struggle once the ball was a little older. Looking to sweep the ball. Appeal there from the bowler, thinking maybe was that close enough. The ball definitely pitching in line, but umpire maybe thinking maybe a little bit of turn and ball might have straight down the leg side. Here comes Venkat and knocks him over. This is nothing short. Absolutely nothing short. Just whacking across nowhere to the pitch of the ball. And he has to head back. No balance in the position. Head somewhere else. The ball pitching somewhere else. And yeah, that doesn't look good here at the moment. And that's a wicket here for the bowler. So they're striking and they're striking too. 30 for 2. So Ravi departs and walks in Ronak Pednekar at number 4. And that's what I mentioned. It's always difficult when the spinners come in, the fielding restrictions have eased off, the ball has also got softer. It's very, very difficult to score runs on any wicket. And for that matter, this wicket just slows down a bit as well. We saw a bulk of the runs scored in the 10 overs. 10 overs by Sportsweek. And the openers just kept going. And the next 10 overs, it was not going at that pace which was intended, which was looked upon by the coaches as well as the think tank of Sportsweek. But finally, they managed to put a good total. And it's a very imposing total. On a wicket like this, it's certainly a challenging and a pretty competitive total. .181 being posted. Nicely bowled here. Nicely bowled here, just outside. So trying to channelize himself on that space just outside, and he knows now he has to bowl against the left-hander and the right-hander. The fielder has to rotate the line as well, and that is what professionalism is all about. You just got to do your job. Well, those who are unprofessional and just not playing regularly, they can so again, trying to cut away, not too short, but he went deep into the crease and just cutting away towards that fine leg region. In fact, the deep third man region for a boundary. That's a pretty good piece of batting. That's how you got to make use of the depth of the crease. That will give him a little bit of confidence here, that boundary. Always need to make use of the feet and track the trajectory and the line of the ball when it comes to the spinners. 35 for 2. Swept away nicely, man in the deep. Going to get a single. He's bowling well, he's flighting as well. Trying to bowl just outside the line. A success in that over for Venkat. And it's the end of 7 overs, 36 for 2.
So another change here. Nagapakanur has been introduced from the GC, and actually if they picked it in the first go, it could have been a chance there. Not cleanly collected, and getting a single in the short covers. This is a good time here for someone like Nagapakunnu to bowl. All the matches are going to play on the same venue. So that becomes important here for all the bowlers to see what the surface is doing. That's going to be very important because these are knockout matches. You are not going to get second chance. So you got to learn what is happening from the surface. You got to see what is the right length on this. Yeah, bowled well. Is nippy. Is not giving that air compared to someone who is bowling at the other end, Venkat. So he's slightly nippy, bowls it little flat. Drives it straight to the short covers. And that is what he is going to continuously pepper with that length. He's got protection, more protection on the offside. A wide call. That's exactly what I was mentioning. Not trying to do anything extra. Something you do extra at this stage is going to give little extras for the opponent side. It's the best phase here for the bowlers. Earlier bowlers have picked up 2 wickets. The match at the moment is heading not in the most positive direction for the batting side. If someone was going hard at you, things could have been different. This is just the best phase to keep bowling over there. You just can't pick wicket all of almost every ball. So just going to pepper you with that line and length and just hope that one works in your favor. That's how the best of the bowlers keep persisting with that. Oh no, oh no. This is way above. And it will be looked upon by the square leg umpire. No ball has been called. And that has not releasing the ball nicely from the hands. So no ball has been called, and on top of that, the next ball is going to be a free hit. Once again, banged in shot, trying to cut it. Little late in playing that shot. Ball just skidded on nicely, straight on. Dot ball here, costed nothing for the bowling side. Half stop by the bowler himself, but it's going to ricochet, going down towards the long region. Stopped by the fielder, and just going to be a single to finish that over. So at the moment, it's going a little slow here for Teejan. 8 overs gone, 44 for 2, chasing 181 runs. Eight overs, 44 for 2. Still not pushing hard at the moment, the batters. Nicely bowled. Waited for the turn, but the ball came back in. Is landing the balls in a very good spots at the moment. That is very important. Just around a good length, 4 meters away. Once again, that same length, back of length. Fielders are there on the offside. Couple of dot balls. This one was a little bit flighted, given it in the slightly slow, maybe 5 km slower than the earlier 2.
That's a good sign here. There's maturity coming in up to the bowler. That's what you got to do in T20. So Weber bowling nicely. This is in the air, chipped in the air. Never looked to play it too hard. Just wanted to chip it and get a single. It's bowling well at the moment, Weber. Just conceding dot balls. The batter is also not aggressive at the moment. No attacking mode has been switched on by the batters at this moment. That is creeping the asking run rate way above the levels. This nicely driven on the rise. Down, there's a fielder at long off. Another single. So they are dealing in singles at the moment. And it's happening in a pretty good way for the bowling side. Sportsweek, they are into the thick of the things. Well in control of the game. 47 for 2 at the end of 9. Teejan. So there is a comparison. 88 without loss in 9 overs. And if you compare that with Teejan, they are way far back. 47 for 2. And it's almost like a Mount Everest to climb at the moment for them. They are looking for the victory. They have to be positive. Should always look for victories. Should always look end up with positive thinking. Just keep playing and playing there. Asking run rate is piling up and is going to put pressure on the batters coming up next in the middle or lower middle order. So that's not the best way here to approach the game. Someone must at least take the attack to the opposition. Oh, this is beautiful bowling. You got a lot of turn there, a lot of purchase as an off spinner. Sharp turn, beaten the batter in defenses. A good turn there. Another ball flighted, more close towards the bat. So 2 dot balls here to begin his spell. Kaushal. Partnership of 17 runs of 19 so far. So they have spent some time. 19 balls is a pretty good enough time for any partnership. So someone just need to take the charge and get some runs. Just pushing at the moment for a single on the offside. Good start here from Kaushal as well. Is bowling from round the wicket. It's bowling from round the wicket across. Bowled well against the left-hander. So it's going to be more So it's going to be more easier for someone like Weber to bowl against the left-hander. The ball going to just turn away from the left-hander. And no intent has been shown at the moment from the batters to go after the bowling. That always allows the bowlers to find the areas that he wants to bowl on a regular basis, because no one is attacking him. That's the best time for any bowlers to bowl. Charging down. That's the first sign of a positive intent. Going to get a single. .49 for 2. We are into the 10th over. Once again, going into the forward defensive shot, pushing it back to the bowler. Just the 2 runs taken in this over so far. And we'll be reaching and completing the halfway mark.
Keeping low there, little low, he went for the square cut and a dot ball. So just the 2 runs conceded and dot balls as well in this over. A good start for Kaushal. That marks the end of halfway. Is 10 overs gone, 49 for 2, chasing 182 runs Teejan at the moment. And will be little time, a little bit breather for the fielders as well. And change in voice is over to Raj for the next updates. Thank you, Harish Kakodkar. Back live over here. Score moves to 49 for 2. 10 overs has been gone. And they're chasing 182 runs, the target. So 10 overs remaining, 133 runs to win this form here. Batting side point of view, they need to shuffle the gears. You can't keep things too late. This is the time you need to go after the bowlers and put some runs on the board. Only 49 runs on the board. 10 overs has been bowled. Somebody has to play that the role to go after the bowlers. Nagappa into the attack. Will be bowling the 11th over for the side. Oh, shot down the ground. The fielder will cut off. Yes, in come the throw. They'll sell for 150 up for the Teejan. In the 11th over. Ronak, the man on strike. The left-handed batter. Oh, excellent delivery there. I wasn't interested in that call, you can see. Terrific delivery from the bowler. Doing the leg spin. Excellent delivery. Nagappa bowling a second over. Oh, shot. Excellent shot for the fielder there. It's gone all the way for 6. What a shot from the left-handed batter. Ronak. Good use of his feet and bang into the fence for 6. Terrific shot from the champion. That's a MACQUA 6 for you guys. There we go. Way she goes into this fence for 6. 56 runs on the board with that 6. Solid defense there. I think they are pilling there. That's out. Outside edge and has been sent back in the pavilion. They lost their second wicket over here. Third wicket, sorry. 56 for 3. Nagappa got a breakthrough over here. Ronak has been sent back in a pavilion after hitting that 6. 56 for 3. Good bowling from these Sportsweek. After putting the 182 runs, the target, and a terrific comeback with the ball. They're not allowing this batting lineup to go after the bowling. And Nagappa got a first wicket over here. He's bowling a second over. Last delivery of the second. 15 run has been given and a wicket. New batter walking in. Abhishek Devadkar, the new batter, walks in. 56 runs on the board. They lost their 3 wickets. We are into the 11th over.
tightened it better in the crease there. Abhishek. Thurwa looking good there, and the non-striker and is playing on a 28 face 25 delivery. And a new batter, Abhishek Devalkar. 56 for 3. We're into 11th over. Last delivery of this 11th over. Oh goodness, my drop. Manthan the keeper. I think he was in the first slip there, but what a try from the... Should have been taken, that one. Would have been fourth. Have a look at this replay. Dropped. Goodness. Easy catch has been put away. The slip in the Manthan there. Should have been taken. So, end of the 11th, 56 for 3. Rohit into the attack. Thurwa, the man on strike. Good fly delivery there, full toss, and that's running down the track. The fielder will cut off. Couple of runs has been taken. In come the throw. 58 runs on the board with that 2 runs. Runs on the board. The score moves to 58 runs. Another 53 delivery. 124 runs to get from here. They need a big shots if they want to win this match. The singles and doubles won't help the total. .59 runs on the board so far. It's a single, and he'll off the mark. Abhishek off the mark with a single. Oh, dancing down a track. There's a fielder. It will just fell short though. Get a single for that. Another single. Just doing dealing ones and twos at the moment. 61 runs on the board. Last delivery of the 12th over. Dancing down the track this time into the gap. That's traveling. That's get a boundary here. MACQUA boundary. They need many of those big shots if they want to win this match. And 12 overs has been gone. 66 for 3. 48 deliveries remaining. 116 to get from here.
these two have to play something special inning. They want to take this team home. 66 for 3. Abhishek, the man on strike. Oh, shot. That's biggie. And that's out of here. Terrific shot from Abhishek. That's a MACQUA 6 for you. Have a look at this on replay. What a shot from this fella. Terrific. Excellent use of his feet and bang into the fence for 6. So score moves to 72 with that 6. Shot, there's a fielder down there, will cut off. Another single. 6 and a single. 73 runs on the board. A 7 run has been came in those 2 deliveries now. This will be interesting now. Atharva, the man on strike. Abhishek. Oh, shot, just short to the fielder there. In comes the throw. Good throw from the fielder. 79 runs on the board. They're struggling at the moment here. Teejan, they're struggling. Another single. Sportsweek, the captain will be very pleased the way the boys has been played. Bowling superb. He's not a sort of a problem here for the captain. Dancing down the track, and there's a fielder. Another single. 80 runs, 81 runs on the board with that single. 39 delivery, 101 run to get from here. That's a big ask. Shot, another single. Get another single here. So they're just dealing things in singles here at the moment. "37 deliveries, 99 to get." Last delivery of the 14th. Another dot to end that over. So 14 overs has been gone. 83 for 3. So 83 runs on the board. They required a 6 overs, 99 to get from 36. Atharva, the man on strike, is playing on a 43. Faced 34 deliveries in that 43. And that's a shot, and that'll run to the boundary, you know. They'll get a couple of runs. Dill scoop from the batter. Abhishek moves to 45 with those couple of runs. Sorry, Atharva.
Another single. "86 runs on the board. They have to shuffle the gears if they want to win this match. Otherwise, it will be a different result of this match. And shot into the gap. There's a fielder. One more. They're running for second. And good running between the wicket. Excellent running between the wickets. 2 runs has been taken. 88 runs on the board with that couple of runs. "33 balls remaining from here, and 94 to get." Another single. Oh, chance of a catch there. Keeper is coming underneath. Has been taken. What an inning from the champion has been came to the end. He gone on a 46 runs. The inning has been came to end. Good, well played there from the batter, Abhishek. A third, he will be walking back to the pavilion on 46. Another set batter is walking in the pavilion. And a new batter walks in, Rupesh. Bat named Bhatta. And another left-handed batter walking in. "89 run has been scored. 4 loss of 4. Goodness my, they're in a deep trouble at the moment. 31 deliveries remaining, 93 to get. And the new batter, Rupesh Naik is a tall, high backlift, terrific campaigner, this champion. He's having those wide range of shots with him, this Bhatta. Another fine campaigner is walking in the middle. The last delivery of the 15th, 89 for 4. Right-handed batter, Bhatta. Oh, shot. Oh, goodness. He got a lifeline over here. Dropped on end of the 15th. 89 for 4. And a change in the commentary box. There will be a Krishna Devji. नया गेंदबाज इस्तेमाल होगा इस मैदान पर। एक बेहतरीन माहौल है, लक्ष्य बहुत दूर का बच चुका है। यहां से एक बेहतरीन बैटिंग करनी पड़ेगी। $932 जाइए रणजीत से पीछे अंतिम 30 गेंदों पर। और शॉटगन ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर खिलाड़ी पीछे, एक ही रन वहां पर बनेगा। इक्के दुक्के के साथ सहारा बनता है इस खेल का और टीम का स्कोर पहुंचा है जो कि समय पर 90 पर।
और फिर से कट किया वहां पर। देखिए हर ओवर में आपको लगभग 15 रन जोड़ने पड़ेंगे, उससे भी ऊपर, शायद 15 से भी ऊपर मैदान में। तो आक्रमण चाहिए मैदान में, आक्रमण ही बचाव का साधन मैदान पर। इस बात इस खेलने का पास क्या लेग स्लिप पर गेंद निकल चुकी है, एक रन वहां पर बनता हुआ। और इशारा अंपायर का बिल्कुल पहुंच चुका, बल्ले पर लग कर गेंद निकल चुकी है। 91 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओ इस बार बीट क्या, एक कुशल बॉलिंग मैदान में। सामने वाली टीम के लिए थोड़ा संकट मैदान में, क्यों पता कि यहां से भरपूर चाहिए बैटिंग आक्रामक। ओह बीट क्या वहां पर रुपेश को, बहुत सुंदर बॉलिंग, हल्का सा अपील किया लेकिन लगातार डॉट गेंदे। इस बार ऑन सेट पर बल्ला तेज से घुमाया, गेंद निकली लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। मैक्वा सिक्सर निकला वहां पर, एक बड़ा शॉट। और अब 24 गेंदों में 84 रन, जिससे पीछे मैक्वा बहुत सिक्सर लगाने पड़ेंगे, लगभग 10 छक्के मारने पड़ेंगे आपको, लगभग 12 छक्के। खुर्ची पर लगी गेंद और शायद खुर्ची टूट चुकी है, मतलब ताकत और शॉट है ये। ओह चेंज अप पे शायद रुपेश स्ट्राइक लेना पसंद करेंगे वहां पर, रनआउट का मौका। ओ देखिए ये आउट मैदान पर, धोनी ने भी एक रनआउट किया था वहां पर। देखिए आईपीएल में कुछ उसी तरह से अंदाज गए, लेकिन वो ऊपर से थ्रो किया, ये नीचे जमीन के कार्पेट के सहारे थ्रो किया और ये आउट। नया बल्लेबाज फैजान मैदान पर, साथ देगा रुपेश का। रुपेश एक आक्रामक खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी है। ओह तेज गेंद निकलती ऑफ्टर के बाहर से, गति बहुत सुंदर थी इस गेंद पर, और लाइन उतनी कड़क थी, ऑफ्टर के बाहर रखा गेंद को। नाइनटीन पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओह तेज शॉट, ऑन साइड पर मिड विकेट पर फुल टॉस बनाकर खेला। देखिए अब फर्क नहीं पड़ेगा, इक्के दुक्के से उतना कोई पता है। 99 पर पहुंचे टीम का स्कोर। ओह शॉर्ट पिच गेंद ऑन सेट पर खेला, लॉन्ग ऑन पर। देखिए अब इक्का दुक्का बनाने के बाद ये 100 रन टीम के पूरे हो चुके।
अब 82 रन विन है मैदान पर। और फिर से इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर एक क्रूशल फील्डिंग वहां पर, और कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। पर देखिए विकेट हाथ में बचे है, शायद उतने अटैकिंग शुरू में पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग देखने को मिली मैदान पर। और अब यहां से 101 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैच में 5 विकेट नुकसान के बाद। 17 ओवर चल रहा है मैदान पर, 5 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, शायद अंतिम ओवर इस गेंद की, इस ओवर की अंतिम गेंद बची। और एक बार तेज शॉट लगा, पॉइंट पर कट किया, गेंद को पॉइंट पीछे रखा है। यहां पर भी एक ही रन मिलेगा। 102 टीम का स्कोर। खेल समाप्त हो चुका है 17 ओवर का मैदान में। अच्छी गेंद, अच्छा फील्डिंग वहां पर। 102 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पे, डॉट गेंद निकलती हुई। ओह, तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए गति सबसे अहम बात है। ये ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, रूम बनाने का प्रयास का, ऊपर डॉट निकलती हुई गेंद, लगातार गेंदें डॉट जाती जा रही है। प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सामने वाली टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है मैदान पर। दर्शक देश से पोस्ट कहना चाहूंगा, टॉस जीता स्पोर्ट वीक टीम ने, जो कि टॉस जीता और पहले बैटिंग की 182 बनाए, जिससे पीछे उसका पीछा करिए टीम मैदान पर। और पिच गेंद सीधा खेला, मिडा पर खिलाड़ी अंदर है, रन नहीं मिले वहां पर। तेजान टीम जो कि अब बैटिंग कर रही है, चेस करती हुई, अभी तक 102 बनाए 5 विकेट नुकसान के बाद, 17 और 3 गेंदों के बाद 80 चाहिए अंतिम 15 गेंदों पर। नो बॉल का इशारा चुका है, फ्री हिट का माहौल मैदान पर, और फ्री हिट के माहौल पर एक मौका मिलेगा आपको। ओ तेज शॉट हवा में खेला, मिड ऑफ को क्लियर किया, शायद कितने रन बनेगा पर, शायद गेंद निकल रही, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 4 रन मैदान पर, मैक्वा चौवा मैदान पर निकलता है इस खेल में। मैक्वा बाउंड्री जो निकल चुकी है इस वक्त नो बॉल पर, फ्री हिट पर माहौल पर, और कितना कुशल ऑफ स्टंप के बाहर से खड़े खड़े शॉट को खेला। इस बार तेज शॉट खेला, फिर से लॉन्ग ऑफ पर, ऑफ स्टंप के बाहर से। देखिए वो खूबसूरत टाइमिंग मैदान में, लेकिन अब शायद मेरे बाद थोड़ी देर हो रही आते आते, 1-2 से काम नहीं बनेगा। 14 गेंदों पर 74 रनों की आवश्यकता, अब काम बहुत मुश्किल लग रहा है।
तेजान टीम के लिए। रुपेश प्रयास कर रहे हैं अटैक करने का। ओ इस बार फिर से शॉट को खेला ऑन सेट पर, मिड विकेट पर। क्या फील्डिंग वहां पर, कमाल की फील्डिंग। ग्राउंड फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी इस वक्त अब, जो कि स्पोर्ट विकेट टीम के मैदान पर। क्या फील्डिंग की इन्होंने है। 1-2 1-2 109 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर, जो कि अब बाहरी मुझे लग रहा है यहां से मुश्किल होने वाली है। 13 गेंदों में 73, काम अब मुश्किल। लगभग 33 से भी ऊपर रन चाहिए अब इस खेल में प्रति ओवर। ओ तेज गेंद निकलती हुई और समाप्त हुआ है लगभग 18 ओवर। अब खेल बचा हुआ 12 गेंदों का, मतलब 12 गेंदों में 73, हर ओवर में लगभग 36 रन जोड़ने पड़ेंगे। और इस बार 23 शॉट, देखिए 21 हो गया। अब हर ओवर में 36 रन जोड़ने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल काम। और फिर से इस बार थोड़ी सी नीचे रही गेंद, गेंद को खेला तो लॉन्ग ऑफ पर, पीछे हटकर खेला गया, लेकिन फिर भी वहां पर 1 ही 2 नहीं रन। देखिए लक्ष्य अगर यहां से बात होती 20-22 की तो बात अलग रहती। आपको यहां से तेजान टीम लगभग संकट के घेरे में। और शॉर्ट पिच गेंद, पुल किया गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर। मैक्वा सिक्सर मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार पुल किया मिड विकेट पर, हालांकि उतनी टाइमिंग ठीक नहीं है, 1 ही रन वहां पर बनेगा। शॉट में ताकत जरूर थी, लेकिन शायद उतना टाइमिंग हुआ नहीं गेंद पर, लेकिन 1 ही रन। 116 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। स्पोर्ट विक टीम इस मैच में लगभग जीत के तार पर खड़ी है, सिर्फ अब औपचारिकता बची यहां से। और इस बार 23 शॉट फिर से, रन नहीं वहां पर। देखिए मुश्किलों के साथ बिल्कुल यहां पर मिलेगा 1 रन। एक 116। और शॉर्ट पिच गेंद शरीर की तरफ आई गेंद ऑन साइड पर खेली गई मिड विकेट पर। इसके बाद खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन। 1 के दुक्के के साथ अब कहानी बिल्कुल मुश्किलों में आ चुकी है।
तेजान टीम की। तेजान टीम 118 पर पहुंची है, 182 का लक्ष्य रखा है सामने। अंतिम 6 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ। हेलो हेलो हेलो। ओह, तेज गेंद, टप्पा खाते गेंद बहुत तेज निकलती हुई शरीफ के बिल्कुल दूर से। अब यहां से 5 गेंदें बची इस खेल में। वन 81, जिससे पीछे 82 का सवाल, उसका पीछा हो रहा है। 118, 5 विकेट नुकसान पर 5 गेंदें इस खेल में बची है। ओ, बहुत तेज आई अंदर गेंद, अंदर आती हुई गेंद। अपने आप को रुपेश ने संभाला, लेकिन वहां पर रन नहीं बनते हुए। हाँ कल्याण सर, सर बढ़िया सर। फिर से अच्छी लाइन, देखिए 1 रन वहां पर बनता हुआ। एक ही रन वहां पर बनता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 119 रन मैदान पे। तेजान टीम लगभग यहां पर हार ही चुकी है। अब सिर्फ कुछ गेंदें बची जो कि औपचारिकता। शॉर्ट पिच बाउंस, उछाल को खेलकर खेला, विकेट कीपर के लिए मौका और ये आउट मैदान पर। देखिए मैच समाप्त होने के बाद स्पोर्ट वीक और तेजान टीम दोनों ही टीमें, कप्तान उनके टीम को लेकर हमारे पैंडल की तरफ पहुंच जाइए। जो स्टेज रखा है वहां पर हमारे चीफ गेस्ट पहुंचने वाले, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। दोनों ही कप्तान ध्यान में रखिए। स्पोर्ट वीक और तेजान टीम दोनों ही कप्तान जो अभी टीम खेल रहे हैं, वो सभी खिलाड़ी हमारे स्टेज के सामने इकट्ठा हो जाइए मैच समाप्त होने के बाद। प्रेजेंटेशन बॉक्स में मुलाकात होगी आपकी सभी की इस इनिंग समाप्त होने के बाद। दोनों कप्तान जरा ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। स्पोर्ट वीक और तेजान कैप्टन्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वहां से। नया बैटर पहुंच चुका है। इस बार बढ़िया लाइन। ओह, तेज गेंद निकली है और इसी के साथ ये इनिंग भी समाप्त हो चुकी है। मैच को जीता स्पोर्ट वीक टीम ने, उनका हार्दिक अभिनंदन। तेजान टीम जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उनको भी नमस्कार। देखिए इनिंग समाप्त होने, हमने शुरू में आपको बताया था हमारे चीफ गेस्ट पहुंचने वाले पैंडल में। आप पहुंच जाइए वहां पर, हम जो स्टेज है प्रेजेंटेशन बॉक्स। बंद कर बंद कर। हेलो हेलो हेलो।
Please give a warm welcome to this gentleman. Goa Board and High School and High Secondary Vice President, Vijayanan High School and Vijayanan High Secondary Chairman. Mr. Praveen Jana, the manager of MACQUA, will give a warm welcome to our guest, Mr. Rupesh Thanekar. I also request the man of the match, Sanat, you can come and collect your man of the match. 42 ball has been faced and 76 run has been scored. I request Sanat, you can come and collect your man of the match. A magnificent inning from the champion has put in the team on the driving seat of this match. Sanat, you can come and collect the man of the match. And Rupesh Thanekar will give this man of the match award. And Sanat, what was the thing was going on when you came out, and it was a dashing, entertaining inning from you. It was a good toss to win for us. We chose to bat for it. It was a really good wicket to bat, and we took full advantage of it. You enjoyed the inning, that 42 balls of 76 runs you scored? Yeah, I got a very good start. I was getting boundaries easily, so there was not much pressure on me after the power play. Thank you very much, and best of luck for your next matches. And I request our guest Rupesh Thanekar to say some few words of this tournament. So. Congratulations to both the teams. Actually, दोनूय टीम्स बऱ्यांचो बरो खेळ केलो आनी मखिया जे ऑर्गनायझर आसात ते बरे तरेन फाटले कंटिन्युअस दीस कितके दीस जाले कंटिन्युअस हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता आनी 25 तारीख जायसर हो टुर्नामेंट चलतलो आनी ह्या टुर्नामेंटाक आयज बरे तरेन जो मॅन ऑफ द मॅच आसलो तेणी बरो खेळ केलो जो 42 बॉल्सान 76 रन्स काडले आनी मागता सगळ्या भुरग्यां कडेन गोंयच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन की तेंच्यांनी सदींच कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस करची आनी जे तरेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें IPL जो चालू आसा सद्या आनी त्या IPLाक 13 वर्साचो एक भुरगो IPL खेळटा तशेंच आमचे कडेन गोंया कडेन आमचे खुबशे प्लेयर जे आसात तेंच्यांनी जर प्रॅक्टीस करीत जाल्यार येता त्या काळान म्हाका दिसता तुमी जवळ जवळ 3 ते 4 ते 5 तरी कमीत कमी भुरगे फुडल्या वर्सा IPLाक पावूं शकता. ताका लागून कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस करप ही इम्पॉर्टंट आसा आनी हांव
चड वेगळी नासनात मख्या जो ऑर्गनायझर आसात तांकां कॉंग्रेट करता, कारण तेंच्यांनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून आमच्या सगळ्या भुरग्यांक वाव दिवपाचो प्रयत्न केला. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your precious time.